Fantastic morning, sir. Namaste, everybody. Good to have you this very morning. Namaste, everybody. Anyway, all the messages, this is flashed by. How are you all this very morning? Chaliye, let me ask this very question to all of you. बहुत दिनों से सवाल नहीं पूछा है. How are you this very morning? And all of you joined me on YouTube. Welcome to this week's Happy Minds. कैसे हैं आप लोग? Let me hear some fantastic answers from all of you. Great. Sunny. अरे sunny नहीं हो रहा है. How are you this very morning? Jhakas, Takatak. That's nice. Namaste, namaste everybody. In happy mood, बहुत बढ़िया, एकदम कड़क, blessed. That's nice. That's nice. Diwali धमाका. Oh my God. Namaste Guruji. Namaste everybody. In happy mood. Good morning, sir. लय भारी, शांत, पेड़ के नीचे. ये सही है. Fabulous, feeling blessed. अरे, great. Lovely to see all of you this very morning. Chalo. How many of you actually were in deep state when I played that song? Just let this meditation be for some time. I also didn't want to come out of it, but then the song was only that long, and I thought it's time that we all have realizations and come out. So what was your realization when you were there in that small time for meditation? क्या रहा आप लोगों को? क्या लगा? YouTube में we can't play that because copyright आ जाता है, then the YouTube doesn't allow it. So a lot of people on YouTube don't know what I'm talking about. I played a song for meditation, and that's what I'm asking for. कि वो song ने आपको क्या realization कराया? Let's have a few of you answering that. This is a never-ending rat race. We must not lose a life in that. Absolutely, Kuja. And we all are travelers in this world, isn't it? We are all travelers, and we are traveling, and suddenly in this travel of ours, we realize that somewhere हमें ऐसे लगने लगा कि हम ही रास्ता है. हम रास्ता नहीं, हम मुसाफिर हैं. And as travelers, it's time that it's important that हम लोग कहीं pause लें, हम लोग कहीं विश्राम करें, जिंदगी के कुछ aspects को समझें, and not just spend an entire life just traveling. तो जरूरी है मुसाफिर खाने होने चाहिए जहाँ पर हम रुकें. In any case, don't lose your path. Live a life in all aspects. Okay. Different people have different realizations. Great. और जिन लोगों ने मिस किया ना, वो तो फिर आपने बहुत मिस किया आज का. In fact, when I take this live, and it's a very different flavor when I take this entire meditation process live, because उसके आगे उसके पीछे there's a lot of things which I speak about, and it takes people into a different zone. So कभी होगा तो live, let me do it for all of you. Chalo. This is Happy Minds number 1213, I feel. Last HM ना हमारा number था 1212, and it so happened that date भी 12 थी, और HM number भी 1212 था, and Dashera भी था. So it was a wonderful combination of numbers, 1212, and this HM is 1213. So we are moving on to numbers which are just wonderful numbers. Sir, your video is not very clear, is it? How is it? Is it? Just give me a clarity on. Sir, it is sometimes blur and sometimes shaking because of the network it is showing. Oh. Just give me 1 second. Let me just check my network here.
Give me some clarity. Am I connected now, Beta? Can you hear me? Yes, sir, I can hear you properly, but the video is not clear yet. Okay, just give me one. Strong. Why it is not coming? Am I audible, visible? Yes, sir. This is better now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sorry, guys. There was some network challenge here, and I I hope it's resolved now. Okay, great. Chaliye. So I was talking about that this is Happy Minds number 1213, and it's wonderful to move every week to another number, but then these are all numbers, nothing beyond numbers, and they just kind of reflect the journey which you have taken. So you got to enjoy the journey, enjoy, uh, and take pride in the numbers you have achieved. But that's what the numbers do. But beyond that, it's a journey which is much more beautiful and wonderful. चलो मुझे बताओ आप लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है. I got a beautiful subject to talk to you about, which is kind of a continuation of what we touched last week. But before I touch that subject, just want to know what's happening in your lives. आप लोगों की जिंदगी में क्या क्या चल रहा है. हाँ जी, चलो कोई. And I also want you to ask me some questions. If you have any questions, let's see if we can have some clarity on that. You want to share something what's happening in your life, आप share करो कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है. You can just type in, and maybe you can raise your hand. I'll have your mic on if you want to share something. मेरी लाइफ में तो बहुत कुछ चल रहा है. We just finished our 41st batch of our business leadership program, Ara Samasti, and awesome batch, awesome entrepreneurs. एक होता है कि I was talking to my team, and this एक होता है एक you have those moments of realization that for normal businesses, when the product is delivered, या dispatch हो रहे होते हैं, या फिर आप order एक wind up करते हो, so there's a lot of euphoria, a lot of excitement कि अरे ये काम हो गया, ये project खत्म हो गया, this got delivered. हमारे केस में थोड़ा उल्टा होता है. We don't feel great about when the project is over. So it's a moment of you feel अच्छा अभी batch खत्म हो गया है, and now no more sessions with these entrepreneurs, now no more sessions with these people. So it is not a euphoric moment. It's a kind of a low moment for us. And our excitement, our euphoric moment is when the batch kick starts and we have new people coming in. So last week we had both the flavors. So one batch got over, the 41st batch got over, and 42nd batch kick started. So yesterday was the 42nd batch, 42nd batch of our Samasi's kickstart session. And another set of 30 odd entrepreneurs are there to take the journey with me for the next 8 to 10 months. And we had some beautiful discussions yesterday on the fundamentals required to grow our businesses. So ये मेरी लाइफ में चल रहा है, and apart from that, a lot of other assignments are already on, and we're looking forward to next week, Diwali Mahotsav for all Chrysalians. So वो चल रहा है, उसका मस्ती, उसका practice, and I am also looking for a small performance. Let's see if I can also perform on stage. Apart from my talk, तो मेरा talk भी रहेगा और एक छोटा सा performance सोच रहे हैं, देखते हैं क्या होता है. So let that be a surprise.
हाँ जी, आप लोग की लाइफ में क्या हो रहा है? What is बलराज सिंह सर, दिवाली आ रही है। अरे वाह, कंस्ट्रक्शन बिजनेस बढ़ेगा। हम्म Compared to last year, we have increased inquiries by 140%. Aye, wow, fantastic. This is great news, Balraj. Chalo, wish that you grab as much as you can, as much as you can chew. Huh? ठीक है। कमलेश बोल रहे हैं, sir, blowing at 360 degrees, sir, especially with daily basis productivity with team. Okay, so it's nice. हाँ, बाकी की लाइफ में क्या हो रहा है? There's so many of you there sitting. Hmm. Let me know what's happening. I would love to read what's happening in your life. Subhash says, sir, we have taken so much from our Samasti program, from all sessions, which not only able to express in words. Thank you for changing all of us. I love you, Subhash, for sharing, and love you for all the messages. I was, कल बैच में जब मैं गया, तो I shared with the batch. Let me share something beautiful with all of you, which I shared in the batch. और आप अपने message को continue रखना. I'll go through your messages also. So I was talking about a sense of ownership. So there was this question which came from entrepreneurs कि टीम के अंदर sense of ownership लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है. And most of them, they had this point कि we are doing what we are doing. We give them salaries, and we have even given them perks and cars दी हैं, infrastructure दिया हुआ है, and things like that. But still, the sense of ownership which should happen is not there. So I reflected to them that this very thought of yours कि हमने दिया है, this has to, you have to let go of it, because the moment you say हमने दिया है, so you're thinking, you're operating, you're talking, you're communicating from that pedestal कि हमने दिया है, तो देने का मतलब हमने एहसान किया है. I said this is not the way you create a sense of ownership around you. You are doing because that's what you're supposed to do. You're supposed to give them salaries. You're supposed to give them all the facilities. You're supposed to make them winners. और आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? अगर माँ बाप अपने बच्चों के लिए नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? फिर ना घर में माँ बाप बोलते हैं हमने किया तुम्हारे लिए, एंड द डे यू से हमने किया, जब द डे आपने जताया कि हमने किया, इट्स ओवर ना. Why do parents send you to good schools? Why do parents do all the things which they do for you? Because they feel that's the way it is, that's what they should do. अपने दिल से करते हैं. If you can bring in that small flavor in the way you're handling your teams, in the way you are communicating, dealing with teams, that you're not doing any kind of obligation on them. That's just that. That's the way it has to be. That's the first step. So stop putting an obligation on the team. And second, bring in some element of those obligation हटाने के बाद आप एक neutral space पे आते हो कि you're doing it because that's the way it is. And then maybe the third step you can go on is add some flavor of compassion, add some flavor of a future thinking for the team member, just like you would do for the children. And in that state, you will see that sense of ownership will happen. So I was sharing with them कि ये तो टीम की बात कर रहे हो, वो टीम जो जिसका घर आपके ऑफिस से चल रहा है, वो टीम जो आपके यहाँ पर अपना भविष्य, अपना फ्यूचर बना रही है. What if the customers can also take ownership of the company? Where the customers of yours, they feel your company is theirs. And they were all looking at me. How can it be? Customer को तो वो चाहता है कि हमसे जितना निकाल सके, हम चाहते हैं customers जितना मिल जाए. I said, this is where we are missing out in business. We are so much into transactions कि हम transactions से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे. We're not seeing that it's a great moment for us through our business that we can reach out to people, we can connect with people, they can connect with us, और कुछ अच्छा, सुंदर, बढ़िया हो जाए इस ट्रांजैक्शन से, इस आदान प्रदान से कुछ बढ़िया हो जाए. और जब हम वो सोचते नहीं है, तो ये ट्रांजैक्शन जो है, ये ट्रांजैक्शन सिर्फ ट्रांजैक्शन के रूप में रह जाता है, और ट्रांजैक्शन सूखा होता है. ये हमें खुरचता है, ये हमें कहीं ना कहीं चोट पहुंचा देता है. बट इफ यू हैव अ just a shift of your thought process, can this transaction can it be taken to a higher level? Can this transaction make us build some relationships? Can this transaction be the beginning of some friendship?
Can this be a beginning of a change which we can bring in the world together? तो जब आप ऐसा सोचते हो तो बहुत कुछ संभावनाएं क्रिएट होती हैं. एंड सो उसमें पॉइंट पे मैं लेके गया उनको और फिर मैंने कहा कि टुडे दिस बैच इज स्टार्टिंग एंड यू ऑल हैव कम इन टू आवर फैमिली. You all have walked into this family of Chrysalis, and a time will come जब आप लोग यहाँ से walk out करोगे, you will walk out as Chrysalians, and there will be so many people who will be happy to see you, not from Team Chrysalis, but from the Chrysalis family. There will be so many who are looking forward to welcoming you, and they were all looking at me कि ऐसे कैसे? Why would other customers would be happy that you have got more customers? I said that's the difference. I don't see you as customers. I don't see you as clients. I see you as a family. So you are coming into my family, and those who have been a part of the family in the past, they're happy to see you that you have joined in this match. And then I read few messages which a few of them sent. कि जब बैच चालू हो रहा तो आई गॉट मैसेजेस फ्रॉम प्रीवियस. तो सुभाष ने मैसेज भेजा, सचिन ने मैसेज भेजा, ऋतुजा ने मैसेज भेजा. So many of them send me messages that Sachin ने तो मैसेज भेजा मुझे. Sachin Gaikwad, one of the participants of the 41st batch, he gave a message in the form of a guideline to the new batch. सर ये नए बैच से शेयर करिएगा. तो उसने गाइडलाइन भेजी कि आप if you want to take the best of the batch, do this, do that, and sir is going to take you to a different level. And it was such a beautiful love-soaked message. तो मैं उनके साथ शेयर कर रहा था कि I'm blessed that I have so many who take ownership of Chrysalis, who feel Chrysalis is theirs. And they were, all of them listening to me, they had this in their mind, हम अपनी टीम को भी वो फीलिंग नहीं दे पा रहे हैं, और आपने अपने सर्विस रिसीवर्स को आपने अपने ऐसा बना दिया. And I said, this is just the way you look at things. So by giving them a great product, you're not doing an obligation on the customer. By giving salaries to your team, you're not doing an obligation to your team. It's just that that's the way it is. It's if you have that approach, you bring it to a neutrality, and then from neutrality, आप उसमें add करो your flavor of compassion, your flavor of purity, your flavor of giving nothing but your best. और जब आप ऐसा करते हो तो हर का पेरेंटिंग वाला फ्लेवर आता है उसमें, एक रिश्ता बन जाता है. And that makes all the difference. And from there, people take ownership. तो अगर किसके भी आपके एरिया में कहीं ओनरशिप की कमी है, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका फ्रेंड सर्कल हो, चाहे कोई इनिशिएटिव हो जहां पर पीपल आर नॉट टेकिंग ओनरशिप, यू वुड आस्क योरसेल्फ व्हाट इज योर अप्रोच. अगर आपका अप्रोच है सूखा, आपका अप्रोच है ट्रांजैक्शन वाला, तो ओनरशिप कैसे आएगी? ओनरशिप goes beyond transaction. So this is to love you, Subhash, for sharing that, and love you for that wonderful message yesterday. Anji, let me read a few more messages. We are fully charged with yesterday's session. Arey wah. So Ganesh was there yesterday and lovely. Anji, as usual, charged, joining a chip. Excited for Diwali festival along with starting new projects on the lines of our Samasti. Great, Girish. That's wonderful. Manish, आप क्या बोल रहे हैं? Namaste, sir. Attended leadership program. I've started to implement with our team members and I'm getting positive results too. Great, fabulous. All the best to you. चलिए, आपको let me share something which will be an add-on to what I spoke last, actually. I spoke about this concept called confidence. And confidence क्या बोलता है? Confidence बोलता है that when you have a job at hand, when you have a situation in front of you, you have this question which comes to you. क्या ये मैं कर पाऊंगा? Will I be able to do this? And if you say yes, it shows a sign of confidence. अगर आपके अंदर से आवाज आती है नहीं, ये नहीं हो पाएगा, तो सब में आपका कॉन्फिडेंस उस काम को लेके कहीं
हिला हुआ है या कॉन्फिडेंस कहीं लो है। तो कॉन्फिडेंस इज नथिंग एल्स बट अ साइन ऑफ हाउ यू आर फीलिंग फ्रॉम इनसाइड, सो इट कम्स फ्रॉम योर सेल्फ। तो आप जब कोई काम देखते हो ना कि ये काम करना है, तो आप सवाल पूछते हो, मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं। और आप अगर वो आंसर आता है हाँ, इसका मतलब कॉन्फिडेंस है। अगर आंसर आता है ना, इसका मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है। तो वो जो सवाल है आपका, मैं ये काम कर पाऊंगा कि नहीं, उसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड है मैं, एंड दैट इज कॉल्ड सेल्फ। कैन आई? सो दैट आई ऑफ योर्स, दैट सेल्फ ऑफ योर्स, दैट इज सो वेरी वाइटल। सो दैट सेल्फ इमेज, कि आपकी इमेज जो है, कि आप क्या बोल रहे हो अपने आप से। सो हाउ यू फील इज योर सेल्फ एस्टीम, राइट? एंड हाउ you're thinking about yourself is yourself। एंड वो सेल्फ जो है उसको समझना बड़ा जरूरी है अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए। तो ये सेल्फ बना कैसे, ये सेल्फ की परिभाषा क्या है, ये सेल्फ होता क्या है? जस्ट अ फ्यू थिंग्स ऑन दिस सेल्फ, एंड मे बी वी कैन it's on the psychology side, हल्का सा समझते हैं in the simplest possible way। So I had shared with you last week about this, that जब हम पैदा हुए तो हमारी सेल्फ की कोई डेफिनेशन नहीं थी, कोई परिभाषा नहीं थी, कोई अस्तित्व नहीं था। देयर वाज नो सेल्फ। एंड अगर वो समझना है कि एक्चुअली में अगर सेल्फ है कि नहीं, या इसका अगर एक्सपेरिमेंट करना है, सो टेक अ न्यू बॉर्न बेबी इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। और आप अपने ना, वो चाहे 1 महीने का हो, 2 महीने का, 3 महीने का बेबी हो, तो आप उसको अगर शीशे के सामने ले जाओगे अपने गोद में, तो वो शीशे में खुद को नहीं देखेगा। वो शीशे में शायद जो आपने उठाया तो आपको देखेगा, और फिर आपको ऊपर भी देखेगा, अच्छा ये तो वही दिख रहे हैं जो शीशे में है। लेकिन वो खुद को नहीं, शायद नहीं देखेगा, क्योंकि उसकी नजरों में सेल्फ नाम की कोई चीज नहीं, कि मैं कुछ हूं या मैं एग्जिस्ट करता हूं, वो है नहीं। दैट्स द केस फॉर अ न्यू बॉर्न बेबी। एंड द सेम इज द केस विद एनिमल्स। आप किसी भी पेट को ले लो, और पेट को लेके आप शीशे के सामने करो, तो वो पेट को समझेगा नहीं कि वो है, क्योंकि उसके मन में सेल्फ की कोई कल्पना नहीं है। सेल्फ उसके अंदर है ही नहीं, उसको लगता ही नहीं वो है। That's how it is seen, and that's how psychologists explain this concept। लेकिन हमारा सेल्फ होता है as we grow up, as we become from 5 months, 6 months, we start growing up, our self gets starting made, वो बनते रहता है। And then as we progress around 6, 7, 8, 10 years, as the concept says that around 7, 8 years हमारा काफी हद तक सेल्फ बन जाता है। And by the time we are 11, 12 years of age, हमारा सेल्फ बड़ा पक्का हो जाता है। तो ये सेल्फ है क्या? तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, एंड दे हैव बीन वंडरफुल एक्सप्लेनेशंस ऑन दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड सेल्फ। उसमें से एक कूली नाम के एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बड़ा अच्छा डेफिनेशन दिया अबाउट सेल्फ। एंड दैट्स वन थिंग व्हिच पीपल स्पीक अबाउट ऑल ओवर दी, जितने भी साइकोलॉजी में लोग पढ़ाते हैं, तो एक ये इनकी डेफिनेशन को बोलते हैं कि सेल्फ क्या है। तो सेल्फ इज नॉट, वो बड़ा एक एक ट्विस्टर है, माइंड को ट्विस्ट करेगा जो मैं आपसे बोलूंगा। बट लिसन टू मी, एंड देन वी विल टेक इट अहेड, एंड आई गिव मी योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। आप मुझे बताना आपको क्या समझ में आया। तो वो बोलते हैं सेल्फ इज नॉट व्हाट आई थिंक आई एम, सेल्फ इज नॉट व्हाट यू थिंक आई एम। तो सेल्फ इज नॉट व्हाट आई थिंक आई एम, सेल्फ इज नॉट व्हाट यू थिंक आई एम, सेल्फ इज व्हाट आई थिंक यू थिंक आई एम। अभी अगर जम्बलिंग बंद होगी हो तो मुझे बताओ क्या समझा तुम्हें। हम्म। अगर जम्बलिंग बंद हो गई तो मुझे बताओ। क्या पल्ले पड़ा? व्हाट यू गुड कनेक्ट विद? लास्ट वाला समझा बस। हाँ, टेल मी व्हाट यू अंडरस्टूड। हाँ, मैं रिपीट करता हूँ। I'll repeat. Now, this is what the psychologist Cooley, he said, I am not what I think I am. Hmm? I am not what you think I am. I am what I think you think I am. Hmm. तो जो मैं सोचता हूं वो मैं नहीं हूं।
जो आप सोचते हो मेरे बारे में मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो जो मैं व्हाट आई थिंक आई एम, दैट्स नॉट व्हाट आई एम। तो मैं आई एम नॉट व्हाट आई थिंक। तो मैं जो सोचता हूँ मैं वो नहीं हूँ। और जो आप सोचते हो कि मैं हूँ, ना ना, मैं नहीं सोचता उसके बारे में। तो उससे फर्क नहीं पड़ता मुझे। नाउ लिसन टू द थर्ड लाइन, आई एम व्हाट आई थिंक यू थिंक आई एम। दिस इज द कैच लाइन, आई एम व्हाट आई थिंक यू थिंक आई एम। एंड उसमें पूरी कॉन्सेप्ट बेस्ड है, पूरा सेल्फ कॉन्सेप्ट उसमें बेस्ड। चलो लेट मी, फिर मैं आपको देता हूँ, लेट मी रीड व्हाट यू हैव रिटन, फिर मैं आपको आगे ले जाता हूँ। सामने वाले का नजरिया में मैं कौन हूं। ओके, वी ऑलवेज सी आवरसेल्व्स फ्रॉम अदर्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, हिंदी समझ में आ रहा है। व्हाट यू सी yourself फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, important is what you portray to the person. Hmm. Perception that what people think we are is what we are. Hmm. Multiple possibilities of self expectations. Hmm. राहुल गांधी जैसी बातें हो रही हैं अब। मैं मर चुका हूं, मैं वो नहीं हूं जो। ओहो सुशील बाबू, तुम कहाँ से बातें ले आते हो। समटाइम्स few words can be avoided on open forum. Mhm. Yeah. Who I think I'm in my eyes of others. Sushil is next level. Take it. Okay. Let's not be political here, Sushil. You might disturb, or you might have some feathers ruffled here. Deep subject है sir. Ay shabash. हाँ, highlighting how our self-perception is often based on how we believe others perceive us rather than our own true self. Absolutely. Hmm. समझ से परे है सर। चलो, let's together explore this. हाँ, तो we all are experts in our own lives, right? You all have been living your lives for the last 20, 30, 40, 50 years. तो अगर तुम 30, 40, 50 साल से अपने साथ हो तो तुम एक्सपर्ट ही होगे ना अपने बारे में। तो विद दैट क्लैरिटी एंड विद दैट रियलाइजेशन कि तुम लोग सब मास्टर लोग हो, तो लेट्स टुगेदर एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ। एंड वहां से फिर हल्का कॉन्फिडेंस के ऊपर जाएंगे कि कॉन्फिडेंस में क्या क्या होता है, हाउ इज इट इज कनेक्टेड। ना व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न, तो उसका खुद का कॉन्सेप्ट सेल्फ का नहीं होता, लेकिन उसकी लाइफ जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, एज द ब्रेन स्टार्ट्स डेवलपिंग, एज द न्यूरॉन्स स्टार्ट डेवलपिंग इन द ब्रेन, तो हमारा जो एक मेकअप है, फिजियोलॉजिकल मेकअप है, दैट प्रोवाइड्स द पॉसिबिलिटी कि हमारा साइकोलॉजिकल मेकअप भी होता रहे। एनिमल्स में नहीं होता, बिकॉज उनका ब्रेन डेवलपमेंट इज नॉट ऑफ दैट लेवल। सो व्हेन एज अ चाइल्ड ग्रोज, उसकी लाइफ में दो तरह के लोग आते हैं, दो तरह के लोग उसकी लाइफ में आते हैं। एंड आई वांट यू टू कनेक्ट दिस विद योर लाइफ। दो तरह के लोग आपकी लाइफ में रहेंगे। एक रहेगी, एक तरह के लोग होंगे जो जनरलाइज्ड हैं, आम लोग हैं। तो ऐसे बहुत से लोग आपकी लाइफ में आम हैं, और वो आम है कि नहीं वो आप डिसाइड करते हो। दे डोंट डिसाइड, यू डिसाइड वेदर दे आर जनरल पीपल और दे आर स्पेशल पीपल। सो हमारी लाइफ में आती है जनता जो आम है। आम का मतलब क्या है, नॉर्मल जनता का, जिनकी बातों का हम पे असर नहीं होता, या जिनकी बातों को हम ऐसा सीरियसली नहीं लेते, जिनकी बातों को हम दिल पे नहीं लेते, जिनकी बातों से हमें ज्यादा असर नहीं होता। दीज आर कॉल्ड जनरलाइज्ड पीपल। दे मे बी acquaintances, दे मे बी पीपल whom you met somewhere here there। तो एक ये लॉट है हमारा। एक है जो, जिसको साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं सिग्निफिकेंट पीपल, जो आपके मन में बड़ा एक जगह रखते हैं, whom you think they are significant। Now this is a very a simple clarity has to be there from your side, that ये generalized और significant, ये कौन है, ये आप डिसाइड करते हैं। ये लोग डिसाइड नहीं करते कि मैं सिग्निफिकेंट हूं या मैं तेरी लाइफ में आम इंसान हूं। ये हम डिसाइड करते हैं। हमने जिसको अपनी लाइफ में सिग्निफिकेंट बना लिया,
ये हमारी चॉइस है, जिसको हमने नाम बना लिया हमारी चॉइस। तो हमारी लाइफ में ऐसे दो तरह के लोग हमारे मन में रहते हैं, और जो सिग्निफिकेंट लोग होते हैं, फिर हम सोचते हैं कि ये हमारे बारे में क्या सोचते हैं, और वहां से हमारा सेल्फ बनता है। मैं रिपीट करता हूं, जो ये सिग्निफिकेंट लोग हमारी नजरों में हैं, जब हम सोचते हैं कि ये हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, उससे हमारे सेल्फ की परिभाषा का निर्माण होता है। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, कि आप घर में हो, मे बी एज अ स्मॉल चाइल्ड, और मे बी आपके घर में आपका छोटा बच्चा है, जाने अनजाने में, आई एम जस्ट सेइंग इट्स एज अ, नॉट बिकॉज पेरेंट्स की वो जाते हैं जहां मुझकी बच्चा खराब हो, उनको भी नहीं मालूम कि क्या बात करनी चाहिए। तो घर में अगर एक सिनेरियो ले लें कि बच्चे के हाथ में, एंड दिस इज एन एग्जांपल व्हिच ऑल साइकोलॉजिस्ट गिव, एंड इट हैज बीन व्हेन आई रेड साइकोलॉजी इन 1995 96 ऑनवर्ड्स टिल 19 2000 और के समय में, तो ये एग्जांपल मैंने काफी बुक्स में पढ़ा। एंड लेट मी शेयर द सेम एग्जांपल विद ऑल ऑफ यू, कि अगर बच्चा घर में, आपने पानी मंगाया बच्चे से, एंड चाइल्ड इज 5 6 7 years ऑफ एज, और वो पानी लेके आ रहा है ग्लास में आपके लिए, और मे बी इवन चाइल्ड इज 8 10 years ऑफ एज, और आप जब भी आते हो शाम को, बच्चा जो है, मे बी आप ही गेट्स यू वाटर, और मे बी ही गेट्स वाटर टू समबडी एल्स, है, प्यार मोहब्बत में लाता है बच्चा, या आपने ऑर्डर किया तो लेके आ रहा है, एंड बाय चांस दैट ग्लास फॉल्स फ्रॉम हिज हैंड्स, एंड द मोमेंट वो ग्लास गिरता है, एंड समटाइम्स द पेरेंट्स, आई एम जस्ट सेइंग, व्हाट इफ द फादर सेज और द मदर सेज, तो ग्लास भी ढंग से नहीं पकड़ सकता है, बस गिरता रहता है तेरे से चीजें, यू कांट इवन होल्ड अ ग्लास प्रॉपर्ली, यू गॉट व्हाट बटर फिंगर्स, क्लमजीनेस क्यों है तेरे अंदर, हाउ क्लमजी कैन यू गेट। Now, in the mind of the child, the parent is a significant person. Listen to me. In the mind of the child, the parent is a significant person. And a significant person is saying to him कि तू तो चीजें भी ढंग से नहीं पकड़ सकता, तो ग्लास भी ढंग से नहीं ला पा रहा है। तो child thinks that my parent thinks that I am incapable of holding a glass. And that's how a self is made. Connect हुआ? चाइल्ड थिंक्स, तो डेफिनेशन सेल्फ की क्या है? आई थिंक व्हाट यू थिंक ऑफ मी। तो चाइल्ड, बच्चा सोचता है कि मेरे सिग्निफिकेंट जो मेरा पेरेंट है वो मेरे बारे में क्या सोचता है, एंड दैट इज मे बी व्हाट आई एम। तो वो सोच रहे कि यार ये तो ग्लास भी उठा नहीं पा रहा है। अच्छा, वो बच्चे ने ग्लास शायद उससे पहले 100 बार उठाया होगा, आपको दिया होगा। उससे पहले बच्चे ने 400 500 बार आपको पानी पिलाया होगा। उस 400 500 बार में एक बार गिर गया, तो व्हाट इफ द पेरेंट वुड हैव सेड, अरे अच्छा हुआ गिर गया तेरे से, नहीं तो हमें लग रहा है तू तो भगवान है, तू तो कभी गिराएगा ही नहीं। हाँ, तेरे गिरने से, पानी के गिरने से समझ में आया तू इंसान है, एक इंसान से गलती होती है। एंड दिस ऑल्सो मेक्स द चाइल्ड थिंक, ओ माय पेरेंट्स आर ओके विद दिस फॉलोइंग। तो उसका सेल्फ क्रिएट होता है। समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अरे जिंदा हो के नहीं? हेलो, एक्सीलेंट एग्जाम्पल सर, मोर देन एवर बिफोर, और शाबाश। हम्म, पावरफुल, ओके। तो आपका सेल्फ ये ऐसे बचपन में ऐसा बिल्ट होते रहा, और कुछ सिग्निफिकेंट लोग जो आपकी नजरों में सिग्निफिकेंट है, आप क्या सोचते हो कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, दैट बिकेम द रीजन वाई योर सेल्फ गॉट मेड। और ऐसे बहुत सारे इनपुट्स आपको मिले, कुछ अच्छे मिले, कुछ नेगेटिव मिले, एंड दैट मेड योर सेल्फ। अनफॉर्चुनेटली, for majority of the population across the world, for majority, it has been said that a child, एक मैं रिसर्च पढ़ रहा था
कि जब तक एक बच्चा जो है 8-10 साल का होता है, उसको कम से कम लाख 1.5 लाख बार बोला होता है, यू कांट डू दिस, डोंट डू दिस, डोंट यू इवन थिंक अबाउट इट। तो एक एक वो कहानी थी कि एक बच्चे से पूछा गया, 7-8 साल के बच्चे से, व्हाट्स योर नेम, तो बोलता है डोंट। बिकॉज उसको इतनी बार बोला गया है, डोंट यू इवन थिंक ऑफ इट, डोंट टच दैट, डोंट प्ले विद दैट, डोंट गो देयर, डोंट क्लाइंब दैट ट्री, डोंट जंप ऑन दैट फेस। तो उसको हर चीज में डोंट 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 इतनी बार डोंट बोला गया, और वो भी सिग्निफिकेंट लोगों ने इसको डोंट, जो उसके घर में माँ बाप होंगे जो भी होगा, इतनी बार बोला गया कि उसका सेल्फ बन गया कि आई, दे थिंक आई कांट, एंड वो ही डजंट डू एनीथिंग। वो बड़ा हो गया बट उसके मन में वही टेप चल रहा है, दैट आई कांट डू एनीथिंग। तो this is how our self got made over a period of time. So we become what our mind thinks. The control on our thoughts is very important. Hmm. नहीं, ये तो बहुत बात की बात है, पहले आप बन क्या गए हो आपके बिना जाने, ये आपको समझना बड़ा जरूरी है। सो हम, हमारी नजरों में हमारे टीचर्स बड़े सिग्निफिकेंट थे। हमारी नजरों में कुछ फ्रेंड्स या कुछ स्कूल में ऐसा कोई ग्रुप होगा जिसमें आप जाना चाहते होगे, कुछ ग्रुप, कुछ लोगों के संगत में आप रहना चाहते होगे, या फिर कुछ दोस्त ऐसे होंगे या कुछ आपके क्लासमेट ऐसे होंगे जिनके साथ, जिनकी बारे में आपके मन में एक जगह सिग्निफिकेंट होगी। तो आप क्या सोच रहे हो कि ये आपके बारे में क्या सोच रहा है, would play a major role in making yourself. And that's how all our personalities got shaped over a period of time. And then uske saath saath, then there's another thing called our experience which happened. But major contribution of this goes to our significant others who are there in our lives. So if you have a child at home, तो आप उस बच्चे के लिए सिग्निफिकेंट हो। ये बड़ा ध्यान रखना है आपके कि आप उस बच्चे के लिए सिग्निफिकेंट हो। अगर आप टीचर हो तो आप बहुत सारे लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो। एंड दैट इज व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, आपका एक सेंटेंस शायद किसी की लाइफ बनाने में एक फाउंडेशन के रूप में प्ले कर रहा है, एंड मे बी द चाइल्ड विल होल्ड दैट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। एंड जाने अनजाने में आप कुछ कह देते हो, you don't even realize that children will hold on to it. I remember long back, मुझे एक realization हुआ कि with my children, somewhere in the year to 2013, we were in Europe for cycling, and I had taken my kids. They were 8 years of age that time, and 8 साल के दोनों को मैं लेके गया, and I did not tell, मेरी गलती होगी, मैं I have a lot of surprises up my sleeve. So I didn't tell them we are going for cycling in Europe, and that too it will be around 400 kilometers of cycling. 8 साल के बच्चे, and I asked those guys and they said नहीं हो जाएगा। तो मैंने कहा we will have a great time, and total distance is around 400. So for a week we had to do those 400 kilometers. And मेरे भी थोड़ा सा सरप्राइज हो गया कि I didn't know that it will be so stretching for everybody on day one. Day one we had to do 60 kilometers of cycling, and there was a big group there, and all people from Brazil, Australia, from US, from Germany. ये लोग सब participants थे साथ में, and together we were cycling. मेरे मुंह से अनजाने में सुबह निकल गया, और यार आज 60 किलोमीटर करनी है, एंड बच्चों चलो लेट्स डू इट। एंड कहीं ना कहीं वो, I don't even know when I said that, and I kick myself for saying it. I said, यार बच्चों नाक नहीं कटाना, एंड आई जस्ट सेड, मजाक में मस्ती में मैंने बोल दिया, ए नाक नहीं कटाना, चलो लेट्स गो साइकिल। एंड इन द नाइट वी केम बैक इन द इवनिंग, वी वर डेड टायर्ड। आई एम टॉकिंग अबाउट, हम थक गए थे 60 किलोमीटर साइकिलिंग करके। तो इमेजिन द किड्स, एंड दो वी वर देयर टॉकिंग टू देम, एंड दे वर एंजॉयिंग, दे वर बोथ ऑफ देम हैविंग अ ग्रेट टाइम। और रात को वी हैड डिनर, एंड वी वर इन अ रूम, in a cabin. So Siddharth, my son, he comes to me and says, all of 8 years, he says, and I could see from his face, he was tired. We were also tired. And he says, Baba, aapki naak nahi kati na? And I hugged him, and I felt shit. I had spoken this, and मैं उसके life में significant हूं ना। उसने उस बात को पकड़ा कि what
my father thinks of me is what I am. Maybe he thinks that मैं नहीं कर पाऊंगा. And I just connected and I said, this is something which I should not have done. तो ऐसे बहुत सारे moments हुए होंगे लाइफ में हम सबके, our parents or maybe we as parents, and they went on to shaping that self of people around us, children around us. Hmm? हेलो. कहाँ हो भाई सब लोग? कुछ, what is your takeaway from what I've spoken? Hmm. What's your takeaway? Hmm. Hmm. This is so very important. Love you for sharing this, Ratnali. This is what I wanted to hear from some of you, and happy that you pointed this out. Hmm. कितना जरूरी है कि हमें क्लैरिटी हो कि वो किसको हम सिग्निफिकेंट बना रहे हैं. दूसरा, अगर हम सिग्निफिकेंट हैं किसी की लाइफ में बाय बर्थ, बाय रिलेशनशिप, then we got to be very careful about our words, very very careful about our words, very very careful about our behavior with people around. And this point which Ratnali mentioned is so very vital. हमने किसको सिग्निफिकेंट बना के रखा हुआ है, और कुछ लोग जो हैं वो इतने कमजोर हैं अंदर से कि वो हर किसी को सिग्निफिकेंट बना देते हैं. रहा चलता है, गहरा गहरा नत्थु गहरा, वो क्या बोलेगा. So they think about what they will think. I'm just saying you have to have clarity about who are the significant ones. हाँ, इनके सोचने से मुझे फर्क पड़ता है, इनके सुनने से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता. I care a damn about these guys. If you can be very clear on these aspects. मैं कल मैंने बैच में शेयर करी एक बात कि आपका पीस ऑफ माइंड अगर आपको चाहिए, then you should have clarity about the three kinds of people around you. अगर if you want your peace of mind. Number one, you should be clear about those people who deserve an explanation from you. There are certain people in your life जो आपसे डिजर्व करते हैं. The word is important here is deserve. There are certain people in life who deserve an explanation from you. Means वो significant लोग हैं कि अगर आपने कोई डिसीजन लिया, so they deserve an explanation. That suppose you decide to get married to somebody, right? So there are certain people who deserve an explanation. भाई तुमने ये लाइफ पार्टनर क्यों चूज किया? Or you decide to buy a car. There's some people who deserve an explanation that why this car. There was some other priority in life, but तुमने ये कार खरीदी. They deserve an explanation. तो आपके कुछ एक्शंस को या आपके कुछ डिसीजंस को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ लोग हैं जिन जो डिजर्व करते हैं वो एक्सप्लेनेशन. Then there's another category of people who deserve just an answer. So maybe you bought a car, and maybe at home, maybe your wife deserves an explanation because she was expecting कि तुम उसको कुछ ज्वेलरी दिलाओगे, वो तुमने दिलाई नहीं और तुमने अपनी गाड़ी खरीद ली. तो and I'm not talking from example, अपने self example मैं तुम्हें ऐसे ही बता रहा हूँ. I'm not talking from experience. So you didn't buy jewelry for your wife, but you bought a car. So you got to give an explanation to her. She deserves an explanation that why not jewelry, why that car. But maybe your neighbor is there and he says, अरे आपने गाड़ी खरीद ली. He doesn't deserve an explanation that why you bought a car. He just deserves an answer. Ah, I wanted to buy this car. That's it. But आप उसको समझाते बैठा रहे हो, नहीं एक्चुअली ना मेरा बहुत पुराना सपना था ना, और वैसे भी मेरी पुरानी गाड़ी बहुत 10-12 साल से मैंने नहीं ली थी, तो अभी मुझे लग रहा था. क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो उसको? He doesn't deserve an explanation. He just deserves an answer. That's it. And there's a third category of people in your lives who deserve nothing. Who deserve nothing. Now the problem is, to the wrong guys we are putting our efforts into explaining, and to the right guys we give them nothing. And that's where your peace of mind goes for a toss. So you should be very clear. So this point which Ratnali mentions, that
Are you clear about who are the significant others? किसको आपने अपने मन में सिग्निफिकेंट बना के रखना है, बिकॉज उनकी बातों का आप पे असर होगा, बड़ा जरूरी है. So if you're a boss in a company, you're a leader, so maybe some people in the organization have put you on that pedestal of significant. तो डांटो, समझाओ, but don't hit their self in a negative way, because they may be holding on you as a significant person. So what you think of them is very important for them. Oh, oh, oh. Choose your significant people wisely, absolutely. So you have power to build or break confidence for our nearby team members, family members. बिल्कुल सही कमलेश. All people are significant about God. मतलब समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हो तुम. भाई कहना क्या चाहते हो? It connects with new team members too. हाँ, एब्सोल्युटली. अगर नई टीम मेंबर आ रहे हैं, नए टीम मेंबर ज्वाइन कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, मे बी उनकी नजरों में कोई सिग्निफिकेंट होगा ऑफिस में, or maybe you as a leader, you are significant to them. So is this the takeaway for you? So we started from this very concept that हमारा कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? हमारा कॉन्फिडेंस आता है हमारे सेल्फ से, and self gets made in various ways. One of the ways by which self is made, I'm not saying this is the only way it is made. One of the ways self is made is by we thinking about what those significant people are thinking about us. And then we don't care about it. We just hold on to that. And that somewhere becomes our self. The other part of self is how our self is made is, of course, through our experience. And as we go through experience over a period of time, experiences keep on adding to ourselves. They keep on adding to ourselves. But more than the experience, or it is at par with the experiences, what I think or what we think or what these significant people think about us, that formulates the self more. So be watchful. If you are the receiver, be watchful of whom you think are significant people. And if you are the giver, then be very watchful of you playing the role of a significant person in somebody's life. चाहे आप पेरेंट के रूप में कर रहे हो, चाहे आप लीडर के रूप में कर रहे हो, बहुत ध्यान रखो, क्योंकि आपके शब्द जो हैं किसी की लाइफ शेप कर सकते हैं या कर रहे होंगे. बी वेरी केयरफुल एंड वॉचफुल अबाउट इट, बोथ वेज. एनी क्वेश्चंस? हाँ जी. Snap can also be applicable. हाँ, इट कैन बी एप्लीकेबल बेटा. अब ये तो एक स्नैप लिख दिया, अभी 10 लोग सवाल करेंगे सर ये स्नैप क्या है, फिर मुझे उसका आंसर देना पड़ेगा. इस सतनाली ने लिखा है स्नैप. स्नैप का मतलब क्या है? इन द बैचेस आई वुड स्पीक अबाउट दिस कॉन्सेप्ट. SNIOP. It's a beautiful concept if you can hold on to this. It says stay away from the negative influences of other people. So there are some people you can stay away from, but then there are some significant people whom you can't stay away from. And if they happen to be negative, if they happen to be unknowingly negative, then yourself will be made in accordance to that. But if they are not significant people, then you can use SNAP. SNAP का मतलब है stay away from the negative influences of other people. Oh. ठीक है, रत्नाली कह रही मैंने आप ही को मैसेज किया था सर, मैंने देखा नहीं. But all of you can, thank you for sharing this, Rत्नाली. All of you can pick this up. Stay away. Snap. आपने कहीं डेस्क में snap लिख दो, SNIOP लिख दो कहीं. You can, or maybe one day I'll speak on this concept called snap. It's a beautiful concept that you get influenced by the company you have around you.
So especially negative people, people who kind of knowingly, unknowingly pull you down, people who are kind of putting your work down, they're putting your actions down, they're out there to kind of make you feel low about yourself. ऐसी आत्माओं से दूर रहो. एंड अगर कुछ ऐसी आत्माएं हैं जिनसे आप दूर नहीं रह सकते बट दे आर नेगेटिव अबाउट यू, तो प्रार्थना करो भगवान से कि आपको इतनी शक्ति दो कि आप उनको झेल पाओ, राइट? And that's how you got to handle this. But especially friends जिनको आप lose कर सकते हो, it's okay because they are negative. Lose them. Nothing more important than preserving yourself. Because from self everything happens. From self every action of yours comes out. From self your confidence comes out. ये मैं या I ये जो है ये बड़ा important है. Not from perspective of ego, not from a perspective of pride. It's from a perspective of you dealing with the world. तो आप कौन होते हो उस पर डिपेंड करता है कि आप वर्ल्ड से कैसे डील करते हो. So ensure that your I is very strong and very powerful. These negative people may change their behavior over time. इरफान उसको समझाओ मुझे. Keep working on your inner soul for by positive thoughts. Be self-confident. ये सब चीजें हम लोग करेंगे बाद में, where we if we realize that there is some self which is not right, उसको चेंज करने के लिए फिर then you have to go into therapy, you have to go into positive emotional side, you have to go through various ways by which you can change yourself. लेकिन मेरा आपसे क्या कहना है कि सेल्फ को चेंज करना उतना आसान नहीं होता. नॉट दैट इट कांट बी चेंज्ड, इट कैन बी चेंज, इट इज चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. लेकिन जो बचपन का सेल्फ बन जाता है ना, वो बहुत गहरा घर कर लेता है, बहुत गहरा घर कर लेता है. उसको बदलने में काफी समय जाता है. So any young parent who's watching this video, who's listening to me, even grandparents who are there listening to this, ensure that by through you, knowingly unknowingly, एक बच्चे का सेल्फ गलत ढंग से ना शेप अप हो जाए. बिकॉज आप बच्चे की लाइफ में सिग्निफिकेंट है. आपकी बातें, आपके एक्शंस, आपकी सोच उसके बारे में बड़ा मायने रखती है उसके मन में. सो जब वो आता है बच्चा आपके पास ड्राइंग लेके, और वो ड्राइंग में उसने ऐसे बनाया होता है जिंग जिंग जिंग, वो याद है जो आप लोग बनाते थे, हम बनाते थे 50 साल पहले, तो वही चीज आज भी चल रही है. टिंग टिंग टिंग, वो माउंटेन, उसके ऊपर एक सन और वो चिड़िया उड़ रही है ऐसे करके. वही बच्चा लेके आता है, वो आज भी वही बना रहा है स्कूल में. तो वो अगर आपके पास लेके आता है एज अ 4 ईयर 5 ईयर, तो आप सिग्निफिकेंट हो उसकी लाइफ में. डोंट पॉइंट आउट समथिंग विच इज नॉट राइट, राइट? देयर इज समथिंग राइट ऑल्सो इन दैट पेंटिंग, इन दैट ड्रॉइंग. वो आपके पास क्यों आया है? वो आपसे आपके पास इसलिए नहीं आया कि बताओ मेरी बुराई करो, इसमें क्या है. वो आपके पास आया है बिकॉज यू फील ही फील्स यू आर सिग्निफिकेंट. सो व्हाट यू थिंक ऑफ हिम, सो फाइंड समथिंग गुड एंड से दिस इज वेरी गुड, ये तूने गोला अच्छा बनाया है. डोंट वरी अबाउट द कलर्स, देयर इज समथिंग गुड इन दैट ड्राइंग, एंड दैट सिग्निफिकेंट अदर इज थिंकिंग अबाउट दिस चाइल्ड. अच्छा तू ये अच्छा बनाता है, तो मे बी वो गोला बनाने में एक्सपर्ट बन जाए ओवर पीरियड ऑफ टाइम. यू नेवर नो. बट द मोमेंट यू सी द ड्राइंग, इसमें देख तूने ये ठीक नहीं करा है, चिड़िया ऐसे नहीं बनती है, इसको थोड़ा ये कलर ऐसा नहीं होता है. एंड समवेयर यू हैव काइंड ऑफ डेंटेड द सेल्फ. मैं ये नहीं कह रहा हूँ झूठ बोलो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसको उसकी कमियां नहीं बताओ, लेकिन डोंट स्टार्ट विद दैट. पहले उसका सेल्फ तो अच्छा करो. वो आपके पास क्यों आया है पहले ये पूछो अपने आप से. उसका आने का कारण क्या है? उसका आने का कारण है कि ये जो मैंने बनाया है, आपके मन में इसका क्या मायने रखता है, आपको कैसा लग रहा है ये. तो आप उसको बोलते हो कि इसमें ये अच्छा लग रहा है, और जब आप ऐसे शुरू करते हो कि अच्छा लग रहा है, फिर आप उसको बोलते हो कि इसको अगली बार ऐसा बनाएंगे. That's so wonderful. If the negative person is significant, we need to try change that behavior. अगर आपका कोई significant इंसान नेगेटिव है, मेरे पास भेज दो. Yeah, somebody who's significant but is negative, it's difficult. It's a difficult situation. But then do everything possible to change that person's perspective. Either talk to the person, either
gift a book to him where the person can read and change. Either talk to somebody whom he listens to. Either you go for some kind of intervention where the person should understand. वो effort डालना ही पड़ेगा. You just can't let the person be because आप पे उसका असर हो रहा है. अरे बाप रे, क्या क्या लिखा हुआ है. अभी तुम लोग खुल के क्या क्या बोल रहे हो. ओह yes, being a parent I come to know these things. Unknowingly कुछ mistake हो गई, but now we are connecting it. When we come to know how our word matters, we significantly change. Great, Supriya, that's wonderful. Thank you for sharing. It's all because of listening to Its Happy Minds. Oh, I'm so happy this change happened. God bless. Ah. When you have covered what you have covered today is important, so important every day. It's so important to have thoughtful opinions about our loved ones. We can contribute to building the confidence of our loved ones. Absolutely, Prashant. And unknowingly, knowingly, we can also destroy the confidence of our loved ones. So be very watchful of your words. Be very watchful. हम बोल जाते हैं लेकिन उसका इम्पैक्ट कहाँ किस लेवल तक जाता है, यू कांट इवन इमेजिन. Can't even imagine. So be very careful. तो पहले आप अगर रिसीवर हो, make a list of people who are significant in your lives. अगर आप गिवर हो, make a list of in whose life you feel you are significant. बड़ा ध्यान रखो इस बात का, दोनों लिस्ट बना के रखो कि आप अगर रिसीवर हो तो कौन है वो लोग जो आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंट है. अगर आप गिवर हो तो कौन है जिनकी लाइफ में आप सिग्निफिकेंट हो. एंड देन बी केयरफुल अबाउट योर वर्ड्स देयर. Being significant for someone is a big responsibility. सही पकड़े हो गिरीश, सही, absolutely. So with this, there is some takeaway for you for this from this HM. हाँ जी, कुछ लेके जा रहे हो नहीं जा रहे हो? And I'll see you next week. HM जो है वो हमारा नहीं होगा because I'll be there in the program. We'll have a live HM for all Chrysalians for Diwali meet. I'll share something on that day on stage. It's a beautiful thing, and a lot of things are happening on that. If you're a Chrysalian, be there with your family and do register for that. It's entry is free, but registration is compulsory. Without registration, you will not be allowed to come inside. Huh? And because if you're not registered, ऐसा ना हो कि भीड़ भड़का हो जाए, हॉल में लिमिटेड सीट्स हैं. So ensure that you register yourself, and we still have some seats. अभी भी हमारे पास कुछ seats हैं. You can register for that. And चलो, अच्छा takeaway रहा आज का. Balaraj says, sir, very significant takeaway. Words are strong weapons. Words can be doctors. Words can be, destroyers also. Significant session, Ra. Arey wah, that's nice. Love you, Sachin, for that, and love you for the note which you sent yesterday. Sushil kya bol raha hai? So the receiver is significant in significance life. Are the receivers significant? अभी googly last में जाते समय मत डालना, Sushil. Not everyone is a significant person for you. Think wisely before considering them. Powerful session. Love you too, Sachin. Love you, Siddharth.